In this video, we'll discuss about this book, which is the Rudest Book Ever. And यार देखो, this book is written by the author श्वेताब गांगवार, जिनका एक चैनल है यूट्यूब पे. Personally, bro, I consider Shwetab to be a big brother to me because when I was in my 10th, 12th, I used to watch his videos. I used to listen to his uh, videos. I used to listen to his philosophy because, bro, Shwetab में ऐसी बात थी यार. Whenever I used to listen to him, I was like, he was not selling me anything. He was like genuinely helping people. I was more into I was not into girls and those kind of things that he used to do. I used to listen to that as well. But bro, the perspectives जो वो देता था यार, the perspectives on how to think versus what to think, he was doing that since I guess 2 साल हो गए रहेंगे उसको, ना 1 साल हुआ है, I don't remember. But bro, the perspectives are fire. Just like, if you're watching this video, एक बार ही आप channel check करो शताब गांगवार का, if you are interested. But he just makes very good videos, right? Coming to this book is the rudest book ever, and this is probably the first book that Shweta has ever written. इसका एक और कॉपी था जो मेरे पास है, जो मैंने लिया था पहले. बट दिस इज द व्हाट डू यू से ब्लैक वर्जन. कहाँ पे लिखा होगा, मैं किसी से बोल नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे दिस इज अ ब्लैक वर्जन बिकॉज ब्लैक कलर का है ना, राइट? सो इस बुक में यार, द थिंग्स दैट आई नोटिस्ड और थिंग्स दैट आई गॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स आई गॉट टू नो अबाउट मी स्पेसिफिकली वर. अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको दूंगा समरी, नॉट अ समरी बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, बिकॉज दिस बुक इज सम ये ऐसी बुक है यार कि आप कहीं भी लेके जाओ एंड यू कैन रीड दिस बुक फ्रॉम एनी चैप्टर. आप कोई भी चैप्टर ओपन कर लेना और आप पढ़ लेना, आपको लगेगा कि आपसे बात कर रहा है श्वेता, आप लाइक यूज्ड टू टॉक इन हिज चैनल, राइट? तो यार, दिस बुक, द फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ वाज कि यार यहाँ पे ही वाज फोकसिंग ऑन हाउ टू थिंक वर्सेस व्हाट टू थिंक. नाउ डिफरेंस क्या है यार दोनों में, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सिंस द टाइम हम लोग जब बॉर्न हुए थे, जब हम स्कूल में थे, जब हम घर पे थे, दीज वर द थिंग्स यहाँ पे वी वर टॉट. द एजुकेशन सिस्टम टॉट अस व्हाट टू थिंक, कि हमें क्या सोचना है, ये सोचना है, वो सोचना है, दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड. हमको ऑलरेडी पर्सपेक्टिव्स हमारे ओपन ही नहीं हुए थे. वी आर ऑलरेडी गिवन कि यार यही सोचना है, ओनली दिस इज द थिंग एंड थिंक अबाउट इट, व्हाट टू थिंक. वी आर गिवन सब्जेक्ट्स कि यार इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो. वी वर नेवर एबल टू like question ki how to think, how does one think about the different things in his life, वो कैसे प्रोसेस क्या है ऑफ हाउ टू थिंक. बिकॉज हाउ टू थिंक में थिंग इज दैट अगर आप लोगों को पढ़ाओ कि इनके आंसर्स क्या है, तो वो लोग आंसर्स बाहर कर लेंगे, वरना आंसर्स लिखने जाएंगे. वरना आप लोगों को पढ़ाओ कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं. नाउ इन हाउ टू थिंक यू आर टीचिंग देम कि यार क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, हाउ डू क्वेश्चंस आर मेड, these kind of things. And this is very interesting. If you ever had this thought कि यार like in my life is just कि यार मेरे को जो मिला एंड मैंने वो कर दिया, आई नेवर क्वेश्चनड एनीथिंग. मुझे ये क्वेश्चन करने की, मुझे ये थॉट प्रोसेस रन करने की बारी नहीं है, देन यू मस्ट रीड दिस बुक. यहाँ पे ही टॉक्स अबाउट द ओपननेस. देयर आर 3 steps to do it, right? First is the openness कि यार ओके, आई हैव दिस थॉट पैटर्न इन माई माइंड कि यार ऐसी चीज़ें चलती है, बट देर माइट बी अनदर वे, दैट माइट बी थर्ड वे, देर माइट बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज, आई डोंट नो. जस्ट ओपननेस की यार देर कुड एग्जिस्ट समथिंग, आई डोंट नो. सेकेंड इज डिटैचमेंट, कि आप अपना जो प्रोसेस है ऑफ थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, उसको वहाँ से आप डिटैच कर रहे हो कि दिस इज नॉट मी, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस दैट आई एम अंडरगोइंग. तो आप वहाँ से डिटैच कर रहे हो. एंड इफ नेसेसरी, if with specific data you are unlearning things we are never taught in our. अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. अगर आप स्टूडेंट हो ना, अगर एक मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि यार वी हैव द कैपेसिटी टू लर्न थिंग्स वेरी इजीली, बट वी कांट अनलर्न थिंग्स. अनलर्न थिंग्स इज लाइक कि आपके पैटर्न्स बने हुए हैं माइंड में, बट आप उनको अनलर्न नहीं कर पा रहे बिकॉज वो बहुत स्ट्रांगली बैठ गए. इट कैन बी ड्यू टू आपके सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, फैमिली थिंकिंग है, हर्ड मेंटालिटी, एनीथिंग. बट दोज पैटर्न्स आर वेरी स्ट्रिक्ट इन योर सेल्फ, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो. एंड दैट्स व्हाट ही सेज कि डिटैच करना एंड अनलर्न करना. एंड देन यू फाइंड आउट द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि आपका अगर कोई प्रॉब्लम आया, देन यू नो नाउ, राइट नाउ यू नो कि यार हाउ टू थिंक.
तो अभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अपने तरीके से एंड यू आर फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट वे. This is the book that the basic premise of how to think versus what to think, right? Then he talks a lot about various psychological effects like Dunning-Kruger effect था इसमें. Dunning-Kruger says that कि the more we know, the less confident we feel, and the less we know, the more confident we feel. And the latter part को हम लोग बोलते हैं confident fools, because the less we know, the more confident we feel. So we are confident, but we are fools. So confident fools. And then he talks about belief, perseverance, and backfire effect, and all these things. Backfire effect is something where कि आप एक ideology वरना एक concept लेके बैठे हो, but then if someone says कि यार this can't be true, or try this perspective of thinking about this particular thing, तो वहां पे आपका बैकफायर होता है कि यार मैं मेरा तो ये लेके बैठा हूँ, मैं लाइक दिस इज माय पर्सपेक्टिव. तो आप बैकफायर करते कि नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, और यू डिफेंड दिस पर्टिकुलर थिंग. तो वो बैकफायर इफेक्ट है. And then he talks about a lot of different things, like he talks about this concept where he says ki, like first of all I disclaimer, I hope कि यार मैं like I hope कि this is a book summary, because I have never seen a book summary. I never watched a video on YouTube जिसमें book summary की बात की गई थी. This is just me talking about this particular book. I don't know कि मैं पूरा reveal कर रहा हूँ कि नहीं, but obviously this book goes into deep, like detailed of what I'm talking, because I'm just talking this on a surface level, right? तो आपको book खरीदना है, ठीक है? ये वीडियो से नहीं चलेगा. Over here he talks about this amazing concept, which is he consider yourself to be a nation. And bro, this thing is so profound. When I heard it for the first time, it was like कि imagine करो आप एक nation हो, ठीक है? Like you are India for example. Now आपकी कुछ policies होंगे, right, regarding life. कि आपके कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो आपके बैड बिहेवियर्स, जो आपके बैड टेंडेंसीज, वो सब होता है. आपके कुछ अच्छे पॉलिसीज होंगे कि आप ये करते हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हो, आप सिंगिंग में अच्छे हो सकते हो, आपके पूरा एक मिलिट्री हो सकता है. नाउ कंपेयर दिस टू योर ओन माइंड का बैटल फील्ड. कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ नेशन, कि आप चलते फिरते नेशन हो. आपकी कुछ पॉलिसीज हो गए रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, कुछ पॉलिसीज होंगे रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग फ्रेंड्स. दीज पॉलिसीज आर देयर. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर सेल्फ. आपको लिखना है कि यार दिस इज माई पॉलिसी. अगर मैं एक नेशन होता तो मेरे क्या पॉलिसीज होते एंड मैं कैसे बिहेव करता, बिकॉज दिस कम्स अराउंड आपके वैल्यूज, एथिक्स, इससे ही बिल्ड होता है. लाइक इन योर नेशन यू हैव स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज, स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स कि यार मैं इसके साथ ही चलूंगा. तो अमेंडमेंट्स आपके होते हैं, तो वहाँ पे यार आपके खुद के कुछ रूल्स नहीं है कि आपके खुद के कुछ पॉलिसीज, कुछ एथिक्स, कुछ मॉरल्स नहीं है क्या, बिकॉज पीपल लाइक अदर पीपल हु हैव लाइक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, स्ट्रिक्ट मॉरल्स, स्ट्रिक्ट एथिक्स. खुद के आप क्रिएट कर सकते हो वैसे. दैट वाज वेरी गुड कॉन्सेप्ट. ओके, सो बाय द वे दिस इज जस्ट मी राइटिंग लास्ट पेजेस पे एंड फर्स्ट पेज पे. एंड यहाँ पे बहुत सारे वो चीज़ें भी थी कि यहाँ पे ही टॉक्स अबाउट स्पॉटलाइट इफेक्ट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि यार आप ही लाइक वेन एवर यू आर एंटरिंग अ कॉन्वर्जेशन, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज इन स्पॉटलाइट इफेक्ट. Spotlight effect is something you think you are on the spotlight all the fucking time, but the truth is, the reality is you are not. आप अपने आप को कंसीव कर रहे हो कि आप स्पॉटलाइट में हो. इन द सेम सेंस द अदर पर्सन इज ऑल्सो कंसीविंग दैट दे आर इन देयर स्पॉटलाइट. So they are acting in the way that you perceive them differently, and you are acting in the way that they perceive you differently. So यहाँ पे एक play चल रहा है. You can't be honest with people. You are just playing with these things because you think that यार spotlight आप पे. So you have to behave in a certain way. You have to act in a certain way that can please other people. But that's not the case. You know that, right? Because every single person has a spotlight on themselves. No matter how good, no matter what big achievement you do, you might probably just take 30 seconds to 1 minute, or heck 5 minutes of a single person's time. बट उसके बाद वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे यार. उसके बाद उनका खुद का बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में, तो उनके बारे में सोचेंगे. दैट्स स्पॉटलाइट इफेक्ट. एंड देन ही गोज ओवर अदर पीपल, अदर थिंग्स लाइक यार हाउ द वर्ल्ड इज. Like majority of people say that the world is good, some say that the world is bad. Binaries में खेलते हैं good bad में. But he says that grayish area है. We don't know कि like how humans operate. He gave this term in his book where he was saying that कि
what do you think, like he asked, I guess, himself, ki, what do you think about humans? So some he was thinking that ki, yaar, humans can be confused, humans are weird, humans are complex, these kind of things. तो उनको लगा कि यार complex, when he says, he was like a complex machinery kind में sense हो रहा है, like कि machines are complex, right? तो वहाँ पे he was like कि यार complex तो नहीं है, because humans do great things, do great deeds to some people, like in some cases, and they do very bad things in other cases. So humans, he was saying that कि humans are weird species, कि यार आपको पता नहीं कि सामने वाला पर्सन कैसे एक्ट करेगा, यू कांट गेस. ही कैन बी वेरी गुड, ही कैन बी वेरी नाइस, ही कैन बी वेरी बैड. द सेम पर्सन हु इज बीइंग वेरी गुड एट अ पर्टिकुलर थिंग कैन बी वेरी बैड एट अदर थिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो यार, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई रिस्पेक्टेड पोजिशन पे है आपके पूरे सोसाइटी में, सो डेफिनेटली ही इज गुड एट दैट थिंग. बट डू यू नो कि यार वो घर पे भी अच्छा है, लाइक विद हिज फैमिली इज ए गुड. यू कांट रिलेट इट, राइट? यू कांट से कि यार डॉक्टर अच्छा है तो घर पे भी अच्छा है, इसका बिहेवियर भी अच्छा हुआ ना. ही इज गुड एट दैट पर्टिकुलर थिंग, सो डोंट अज्यूम इन योर माइंड कि यार दिस गाय वुड बी गुड इन हिज फैमिली एज वेल, लाइक उसके फैमिली रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे. डोंट अज्यूम दैट. He could be fighting with his kids, he could be beating his wife, I don't know, we never know. And the same guy who is very loving or good in their house, in the family relationship, whenever you are in a relationship with this particular guy, he's like very good, he's very caring. But on the other hand, he could be very cruel for the outside world, he could be very like harmful for the outside world. He could sell drugs, he could do smuggling, he could do I don't know, whatever. So don't assume कि यार ये होगा. Humans are weird. They act different in different situations. So just accept them for who they are. Don't assume that they are very good every time. He also gives this analogy where he says that compare yourself to an anime ka arc. Like if you guys might have seen animes, वरना एनिमेज मोस्टली आपको पता रहेगा कि यार एनिमेज के आर्क्स होते हैं. लाइक सम एनिमे कैरेक्टर जो बंदा है एनिमे में, ही माइट बी राइट नाउ, ही माइट बी इन आर्क वेयर ही इज जस्ट फाइटिंग फॉर हिज फिजिकल स्ट्रेंथ. सम समटाइम्स ही माइट बी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. समटाइम्स ही जस्ट accomplishing like materialistic things, sometimes he's sad. तो उनके आर्क्स होते हैं यार. तो इमेजिन योर सेल्फ कि यार आपके भी बहुत सारे आर्क्स है, राइट? अभी आपका कौन सा स्टोरी मोड चल रहा है? ही सेज लाइक कि इमेजिन योर लाइफ एज अ मेन कैरेक्टर इन योर पर्टिकुलर गेम. आप कोई मूवी देख रहे हो, इमेजिन यू आर द लीड कैरेक्टर. तो आप क्या क्या चीज़ कर रहे होगे, आपके कैसे आर्क्स हो गए. और अगर आपके ऊपर कोई बुक बनेगी तो क्या वो बुक सैड होगी, क्या वो बुक मोनोटनस होगी कि मैं जिंदा हुआ, I went to college, I went to school, I obeyed the teacher, yes ma'am, yes ma'am, yes mommy, yes papa, yes everyone, and then I died. Is that the life that you are looking for? Like, if is that even the book that you would want to read? अगर आपको बताया किसी ने कि यार I have got this book, try this book, like read this book once, and you are like कि what's the story of this book, like context देना थोड़ा. And he was like there's a guy, he was born in this country, and he spent his 20 years doing education. What simple lifestyle there. He used to obey, he was a yes man, he used to obey to everyone, he used to say yes to everyone. College हुआ, school हुआ, very good degree engineering कर दिया, वो सब कर दिया. Then he got a job, he got a very good wife, he got three kids, he was very happy, complacent, chill tha, and then he died. Would you want to read this book? Or would you want to read a book where, now this could be very extreme, but सोचना यार कि would you want to read this book यार, or would you even want to watch a movie of this person where he's like कि 20 तक उसने, he was like कि bro, okay मेरे को पढ़ना है, ये सब करना है, but at 20 he realized something different. He realized क्या bro, the things that I'm doing are not because of me, they are because of someone else's wishes, and I'm not living according to my reality. मैं खुद से नहीं जी रहा. And then he took some different steps. Maybe he went on hike, maybe he loved motor riding, and maybe he's like into motorcycles, and he was just riding everywhere, and he became a rider. Maybe he got like he maybe he got interest in business, and he went on to create many more ventures, many more startups, many more business, and become a business tycoon. Maybe he was like, fuck everything, I'll go to my village and I'll just chill over there. Maybe.
or maybe he was like doing his job but he was doing something on the else, and he was doing something on the else, and this thing worked out in the future, and these kind of things. So there are very twists in it. So would you want to watch a movie where this is the story कि यार बहुत सारे pivots है interesting, or this which is a very simple life straightforward, obviously this. So imagine करो यार ना कि हमारा लाइफ भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता, like if you are the main character, आपकी ऐसी लाइफ होगी कि ऐसी लाइफ होगी, ऐसी होगी तो देन यू आर ऑन माई साइड. सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी करना है करो, बट करो बिकॉज यू आर ऑन दिस साइड एंड दिस चैनल वुड बी गिविंग यू दोज काइंड ऑफ वाइब्स एंड आपको बढ़ाएंगे आगे. ठीक है, हम भी बढ़ेंगे आगे, मैं भी बढ़ूंगा, तुम भी बढ़ोगे, सब बढ़ेंगे. ठीक है, एंड यही था ब्रो. बढ़िया बुक है, ले सकते हो आप. श्वेता भाई बहुत अच्छे है यार. That's it. Take care, guys. See you, everyone. Peace out. Take care. See you.